So hello guys, I'm Ketan Singh. My Topcoder handle is KetsJS09 and I'm from India. And today we are going to host the Community Monday Meetup for the South Asia region. So as you might know, like today being Monday, we're having a Monday Meetup. And we'll kick things off with like Topcoder Freelancer Fair, the information about this. So, okay, so looks like I haven't organized things pretty well over here. So just give me 1 minute, I'll share the link. Looks like we are off to a shaky start today. Just a second. Yeah. Okay, so this is the link. So this is basically happening on the International Women's Day, and this is going to be like a freelancer fair. So I'm not exactly sure if it's open for men or not, but or if it's agnostic. Yep, absolutely open. Okay. Open to men. Yeah, anyone. Okay. Okay. And like, okay, so like anything special for women, or like is it like any special prizes or? We will have some t-shirt prizes. I mean, it's not specific to women, but the Manning authors that are speaking will be giving away a digital copy of their books. And then Suba, the CTO of Wipro, will be a part of a panel talking about the rise of the individual. So while it's on International Women's Day, it's still celebrating all freelancers. Okay. Yeah. Okay, get it. Okay, so apart from this, I think there's going to be an interview as well, right? Like, so you can see the entire list over here. I've shared the link. So over here, you can see that there will be a welcome note by Jesse, followed by an interview with Confidence and Power with Lily Fogel, owner of Impressive Interviewing. So yeah, so all people who are interested in like gigs, so she's a very like a renowned person in this area. So you can maybe join this and ask for any tips and like learn from her. And then we'll have tips for getting your first client with Ryan. So what sort of do you have any idea like what sort of a client this is like? Is it like a gig client or some other sort of a? Yep. So it's kind of landing so when you branch out onto your own as a freelancer, how to look for getting your first client. Yeah. Okay. Okay. So yeah, this is not like specific for gigs. Like it is about like general freelance, like tip to freelancers, how they can approach clients, or basically how to get your first client. Yeah. So as you can see, like there are like pretty interesting events that day. So for people who are into freelancing, like definitely consider checking this out. Now moving on to the next slide. So over here, we'll be listing the finalists. So this is for the stage one. So as you can see, this is for algorithm, this is for marathon, this is for development, this is for first to finish, this is for QA. So this is for stage one, okay? And okay, so this is stage one again. So this is for UI design, development copilot, design copilot, data science copilot, QA copilot. Now moving on to stage two. So first of all, I'd like to point out like S. Deepak Kumar, you can see yourself over here. So congratulations for that. So you are actually I don't have any words for it really. I'm very excited. Yeah, it's pretty exciting. I mean, it's a pretty big deal. So congratulations again. Yeah. So so as you can see, this is the finalist list for stage two.
algorithm, marathon, match development, first to finish QA. If you'd like me to wait and if you'd like to see, just let me know. Or if you are watching this on video, you can just pause and go through the list. And maybe I'll like everyone will also receive an email pretty soon, like with the entire list. Yeah, so this is the same list again. I mean, not the same list. I mean, the other tracks: UI design, development copilot, design copilot, data science copilot, and QA copilot. Okay, so now moving on to the Humble Fool Cup. Okay, so this is in honor of Harsha Suryanarayan. So the first round is going to happen on March 7. So most probably this is going to be an SRM. Okay, just let me get this out of the way. Yeah, so actually, if you remember, like Deepak, I talked about like in my previous meetup that I think like one meetup before that. Yeah, that we had a very good member of, he was called Harsha. So yeah, so he met with a tragic accident and unfortunately in 2014. So from that, Topcoder has been organizing like this event for the past several years now. So it is in his honor, and from what I know, I think it's only, just let me verify that. Yeah, so Humble Fool Cup is for students only from Triple IT, okay, for the final round. But the virtual event is open for all. So for more details, you'll actually have to like go through this entire article to get the exact rules and regulations for this challenge. But I think he was from Triple IT, so it's like the final round is only open for that. So yeah. Yeah, so now moving on to the next one, it is regarding the health insurance that SafetyWing is offering in collaboration with Topcoder. So Topcoder and SafetyWing are collaborating to offer health benefits to members. And I'm like, it's not like entirely free, but I think the prices are like pretty reasonable. So to get more details, I'll share a couple of links with you. I actually find this picture very funny. Yeah. So this is going to be just a minute. Yeah. So this is going to be oh yeah. So this is an event where maybe Jesse or the SafetyWing team will provide more information to the members about this. So it's going to happen on March 15th. So if you have any questions or if you'd like to know how things are going to operate or if you have like specific technical questions about the insurance, you can just join the call that day. Yeah. And apart from that, there's also a discussion going on. I've shared the link over here. So in this discussion, you can come and maybe post your questions, and potentially Jesse or someone might answer you immediately, or she might share this question with the team, with the SafetyWing team, and they might address it on that day. On 15th, I mean. Yeah. So now moving on to the big news, which is like it is still a big news that we are going to move away from Slack to Discord. So Discord, as you might know, like many people have already joined. Like it's a lot more fun place to be. Like it has a lot more potential for like creating like bots and like custom applications can be built over Discord. It being from a gaming community background, so like it is a lot more fun. So if you haven't joined yet, do join pretty soon, because you might not want to miss out on all the fun that we are having over there. So yeah, so this is the link, or you can just if you have a phone, I mean everybody has a phone now, so you can just use the QR code to get access to the Topcoder Discord. Yeah, and I've heard that some people from like some regions are having some difficulty. So you can actually post. You can post like if you like in the next couple of days till the time Slack is open. You can maybe get in touch with us about that.
So there are some members from those regions who are able to join Discord, so they might be able to help you. So yeah, but the Slack, the community Slack is not going to remain open for a long time. So so if you're looking to join, do join, like make the switch pretty soon. Yeah. Okay, so now moving on to the top gigs as per my discretion, like this week. Okay, so I'll start this off with an India only gig. So as you might know, like this call is for South Asia, which includes like several countries, not just India. But right now I don't see a lot of gigs apart from India in Southern Asia region. So I'll share this for now. So this is basically a Java lead gig. So basically you need to be the lead developer, and the required skills are Java, AWS, and SQL. And for like specific details, you need to like go through this and ensure that you have these skills. And one thing that you need to ensure in all your gig applications is that you make sure that you mention these skills in your resume or your application, so that it doesn't get rejected or like there's no issues. So and like followed with that, I think there's a process for interviews, etc. But do ensure that you mention your skills pretty cleanly, like clearly over there. And yeah, because like Jesse is Corey is over here, so yeah, Corey. So what is the reason actually? Like, is it an automated filtering or something because of which we require the skills to be mentioned like explicitly? So the clients will automatically reject someone if they don't have it clearly listed in their resume. Okay. Even though like there's sometimes small skills that are, would be encompassed by something else, they still want those teeny skills listed. So we do an initial check to make sure that they're already listed in your resume. And if you're missing one, we'll usually reach out and ask if you could just add add that to your skill set and add it to your experience part. Just so that the client can read it, so that you're not accidentally rejected for something that you do have. Yeah. Okay. Yeah. So you heard it, guys. So basically you need to make sure that you shouldn't assume that just because I'm mentioning something that that I don't have to mention specifics. So if you have some skill and you would like to them to know about this, just don't take the chance and mention that very clearly in your application or your resume, so that like there's no ambiguity about it. So yeah, and this is basically a full-time gig. It's a 40-hour per week, and it is BST, so it's +1. So +1, it must be somewhere near UK. Yeah. So yeah. So and the duration is around 26 weeks, and the compensation is okay. So it's an India only gig, but the working hours is BST. So that is interesting. Okay. So I think it must be an Indian client who has, the client that is providing this gig must be an Indian client. And the project that you might be working on is based on BST. So that might be the deal over here. Yeah. So moving on to the next one, it is salesforce.com, software developer. So for this is also a full-time gig. And yeah, this is also a full-time gig, and the working hours is IST. This is also a pretty long gig. It's 24 weeks. The compensation is listed over here. And yeah, so the time zone can be IEST or AEST. So it must be AEST. What is that? Asian, I'm not sure. Yeah, so the client is an APAC-based telecom company. Any candidate from India or any Asian-based country is welcome to apply. Okay. So basically anyone from any Asian country can apply for this. It's not open for everyone. So you for like specific requirements, you need to go through this list. And if you think you qualify, definitely consider applying. Now, moving on to the next one, it is a cloud engineer. So it is a Ruby, Python, JavaScript, IBM Rex, CI/CD, Kubernetes, and microservices. Okay, so pretty broad skill set. But in case you do have the skill set, I mean, I don't know a lot of people who have
all of these skill sets. So if you manage to have that skill, these skills, goes without saying that you should apply if you're looking for a gig. And as a cloud engineer, you will support us in a transition from a bare metal server to a, okay, yeah. So it's like, yeah, pretty well laid out your role, your responsibilities, and what you are expected to bring. Okay, and it also requires, it explicitly says that you need to have minimum 3 years of experience. And this is also a full-time gig. So yeah, by the way, Corey, I'm just confirming this with you. Like, this experience could be Topcoder experience as well, or what sort of an experience can this be? It can be Topcoder experience as long as you have it listed on your resume. Really, they're just looking for professionalism. When you've had about 3 years in the professional world, you've experienced, troubleshooted, worked with people, collaborated. Yeah. So that's what they're looking for. We can argue Topcoder experience better. Yeah. Okay. Or you can argue that better. Well, so Topcoder experience we're able to see and justify. We can see the verified skills. So we can, say, hey, they might not have 3 years working in an office, but they've had 3 years working with this skill. Yeah. And like these are like proven skills, right? Right. Yeah. Okay. Yeah. So yeah, so guys, if you have experience in Topcoder as well with these skills, do mention that very clearly, so that you can make a case that you are experienced. Yeah. Okay, so moving on to our last one. This is any location. This is a senior operations engineer. So I'll share the link. This is also a full-time gig. The working hours is IST. Okay, so the location is any location, but the working hours is IST. Okay. Okay, so I think that rules out a lot of people who might be sleeping then, right? But any case, yeah. So, but the duration is like relatively shorter. It's around 3 months. Compensation is fair, like pretty good. And the required skills are React.js, Node.js, microservices, Kubernetes, and Docker. Yeah, so your traditional full stack development basically. Okay, so by the way, like this is a React.js and a Node.js gig, but it's an operations engineer. Okay. Okay, yeah. The CAA ops engineer is responsible for the quality, maintainability, and stability of applications production environment. Okay, yeah. So what you need to do is like the client might have teams who actually do the development, but you'll be in charge of ensuring that the production environment is stable. So for that, you'll need to have like a deep understanding of the programming languages as well. So yeah, it looks like a pretty interesting gig. Yeah, so if you are skilled in this area and if you are up for this challenge, and I think the responsibilities are also like pretty unique, because I haven't seen a lot of gigs that are around what do you call that, operations side of the stack. So pretty interesting. Okay, so moving on to the, so this is your general listings page. So this is topcoder.com/gigs. So when you come over here, you can just search anything. You can search by skill. You can find a lot of gigs by using that. And then you also have an option to filter by location, like USA only, or India only, Europe only, or Europe only. And you can sort by the date, ascending or descending. So, I mean, if you are a reasonably skilled individual, and if you have some experience at Topcoder or otherwise, like in other places, I'm sure you might be able to find at least a couple of gigs that might suit you. So always consider applying and like make some money and as well as like gaining experience and like living that freelancer lifestyle. So yeah. Okay, so I'll repeat again. It is topcoder.com/gigs. Okay.
So yeah, so there's going to be a change in time. So it is going to, on March 6th, the daylight saving time changes in the US. So I think it happens in the midnight around 2 or 3 or something like that. So I haven't seen it up like myself personally, but the way I know about that is my rule of thumb is that the US stock market opens, from my point of view, right now it opens at 8 p.m. Indian Standard Time, but after that happens, it opens at 7 p.m. Indian Standard Time. So basically, as per my, from Indian Standard Time reference, like the time decreases by 1 hour. So yeah. So if you'd like to ask any specific questions, like I would ask Corey to help with this, but I hope this is clear. So any comments, Corey, about this? It's like, annoying. Yeah, that's for sure. Yeah, because we spring ahead and then we fall back in the fall. So yeah, and that actually what happens is actually opposite in our case, because I actually like trade a bit in the US stock market. So what happens is in our winters, the time increases. So it's actually the opposite thing in our case. So yeah, the US should actually like get rid of it, because like it's pretty annoying, to be honest. But yeah, it is annoying. I think we should get rid of it. Yeah. It throws all the kids off. Everybody gets out of whack. Okay. Yeah. Actually, I was watching a video that actually a dog was expecting to go for a walk, but there like the person was waiting for the like 1 more hour, but it was used to going for the walk. So I was feeling sorry for that. Yeah. So okay. Yeah. So moving on to our last slide. So this is about like this is our calendar, the upcoming calendar. So for the entire calendar, you can just come over here. It is topcoder.com/community/events. So if you come over here, all that you can watch the entire calendar that is currently listed. So it always gets updated every now and then. So you need to actually keep an eye, or you can just come on our meetups and we'll let you know about the primary events that are coming up. So on March 4th, we are going to have RDM 5, starts at 7 UTC 5. Then March 8th, we have the International Women's Day and we have the Freelancer Fair. So here, you, as I mentioned, you'll get all the information about your life as a freelancer and a lot of information on how you can excel in that area. March 9th, we have an SRM, that is competitive programming, 8:25 at 11 UTC -5. Then on March 10th, we have the Topcoder Nation Show, number 14th. It is the gig lifestyle and travel with Ravi June. Okay. So basically, Ravi June is our co-pilot, design co-pilot. And like he loves his traveling and he'll let us know about the gig lifestyle that he's living. So people from India might know that he actually, like currently, I think I follow him somewhere. Like I think he's my friend on Facebook. So I logged in a couple of days ago and I saw that he's in somewhere in Himalayas. So yeah, so he's actually living it. So March 15th, we are having that meetup again. I mean, the meeting about the details about the health benefits. So it happens on 10th. Oh, no, sorry. It's March 15th, but the timing is 10 UTC -4. So March 16th is marathon match 134. This is your OG marathon match, not a machine learning marathon match. And then March 17th, we have the Humble Full Cup. So the details I shared with you, the link over here. And then, yeah. Then on March 19th, we have the SRM. And then on 26th, we have a rookie SRM. So this must be a practice SRM of some sort. So that happens on 26th at 12, UTC -5. Okay. So now if you have any questions, I'm open for that. Please feel free to ask anything. Hello. Yeah. Yeah. First of all, I
wanna thank to Topcoder and Topcoder team because in only 3 months I qualified for a TCO 22. Yeah. And this is a big achievement for me really, and I have no any words to tell my Yeah. excitement. Yeah. Congratulations again. I mean, Yeah, it's a pretty big and deal for, yeah. yeah, I think in 3 months it is really a big deal. Yeah, definitely. Definitely it is a pretty big deal. Like I've seen like there are a lot of members who have been with Topcoder for a pretty long time, and uh, like they are making pretty good money and they win a lot of challenges, but like many of them like still haven't qualified for TCO. Like not, it's not that it's like too big of a deal of not like qualifying, but it's like a good thing that you managed to that in case we do Yeah, manage to have a like on-site TCO this year, like you'll be able to meet everybody in person. So that would be a like yeah, a pretty big deal. yeah, yeah. I hope. And Yeah. I have a question regarding gigs. Hmm. Yeah, Yeah. actually, previous Monday, I got a gig from a Meetup as developer. I'm also a developer. I do React JS project, but I never do any long project for React JS. I never work for any company for React JS. Hmm. But still, I want to just submit, just apply for the gigs. Uh, so just wanna something about it ki I am qualified for it or not, because I never done a big project on React.js. Okay. So like does But it, yeah, yeah, Corey. so I think if I'm hearing it right, your audio cut out a little bit. You're asking, you have experience doing React.js, but you don't have like professional experience with it, project experience. Yeah, Okay. yeah, yeah, And exactly. okay. I think if you understand React.js enough where you feel you can put yourself forward, I would try it. There's no harm in trying. Yeah. Oh, okay. Okay, one more question. Actually, if I make a project and publish it GitHub, and then I submit this link in my resume, that's okay. I know the React.js. This is working for me or not? Yeah. So I didn't hear that. yeah. So actually he's saying that if he creates like a proper project, like a proper website or something, and if he like publishes that somewhere and shares the code in GitHub, and if he demonstrates that via his resume, would that be an indication of his skill in that area? Absolutely, yes. Yeah, definitely. Yeah. 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 By the way, can you share the link Okay. of that gig? Because just so that we know which gig you're talking about. If you have that Yeah. link available with you. Yeah. 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 I'm sharing. Yeah, and how are you doing, Robinson? Yeah, I shared. Okay. Okay, React.js developer. Okay, so I don't see a like explicit requirement for any like experience over here. Yeah, So yeah, yeah, I think your yeah. approach might work if you manage to like demonstrate your skills. And like I Yeah. would, if I were in your place, I would like mention everything, that the hackathon that you won recently, uh, and all the wins that you have managed to, like all the challenges that you managed to win. Uh, you should, I think, mention that in your resume. Okay. Yeah. Yeah, and so that React.js gig is with a company that we've used quite often. Okay.
Used by? Pardon? Sorry. So the client for that is Cisco. Okay. So we have a wonderful relationship with them. Okay. So if you have the skills and you're strong with them, then I would apply for it. Okay. Yeah. So the gig team actually has a very good, relation with Cisco. So if you are skilled, Deepak, definitely apply. Okay. Definitely, I will apply for it. Okay. Yeah. So any other questions you might have? No, actually, I don't have any questions, but I know about TCO regionals, how I qualify, and this is virtual or on site like this. Okay. Yeah. So for TCO regionals, I'm not exactly sure if somebody who qualifies for the real TCO, yeah, because that didn't happen in my case. Yeah. So probably if there's a TCO regional, you might be invited for that. And I think it's also like there are a lot of like discretionary invitations as well. So because Jessie was talking about that, if anybody is interested, you just let me know, and she'll just send out an invitation. So if you'd like to contest, I'm not entirely sure how that works because I'm actually, like, to be honest, having a hard time understanding how that works. But I'll make an attempt. Just let me have a look. Or if you have a like a specific question about this, definitely consider joining Jessie's meetup today as well, or I'll get back to you. I'll check this up. By the way, do you want any specific information about the regionals or anything else? Because all the information is actually shared over here. If you'd like to go through it yourself. I think when it will be white or virtual. Actually, your voice is there's some internet issue, I think, because your voice is breaking up. Yeah. Hello. Yeah. Yeah. Actually, I want know when TCO regionals will held and on site or virtuality. I don't really exact thing about, but I think read somewhere stage 3 qualification is matter for TCO regionals, not about TCO stage 1, stage 2. Only stage 3 will matter for it, and under 20, top 20, you would definitely qualify for the TCO regionals, I think. But I'm not sure because I don't have that much clarity about this. That's why I am asking to you. Yeah. Okay. So actually, couldn't hear entirely what you said, but I understand that you are looking for like more clarity about the rules, right? So yeah. Yeah, exactly. Yeah. So for now, I have shared the link with you, and I'll make it a point that I go through this and understand, because I qualified for TCO regionals, like the proper TCO twice, but regionals I qualified once. But I still am not sure like what is the criteria for that. For the actual regionals, I understand, because you just have to score the points every like 3 months. There's a stage, and whoever gets the rank in those three in that window gets the ticket. But for this, I think it is slightly different. If you want, I can like read it with you right now, or you could do the reading and we can discuss about this maybe in the next meetup, like specifically about this if you like. Yeah, definitely. Because I think, like me, more Yeah, there people might be a lot of people. Yeah. interested to know Yeah. about TCO originals. Definitely. Yeah. And yeah. 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 So from And what I, one more yeah, thing, actually, yeah. please go ahead. Yeah, tell me, because it's not related to TCO or. Yeah. Yeah, no problem. You go ahead. No problem.
Yeah, actually, I know about unit testing. Like, what is unit testing? I never consider about unit testing. Uh, but when I go for F2F challenges, uh, Hmm. I think there we mentioned that unit testing and a lot of challenges Hmm. mention unit testing and all. Like nowadays, RDM matches. In RDM matches also, I got a point unit testing. Can you Hmm. please So look, actually, like in the professional world, like the professional software development world, so like there are two teams mostly, like in a corporate situation. So one is the development team, and the other team is mostly the like the testing team, basically. Okay, like in companies like Wipro, etc. Like there are proper teams for that. Okay, my actually my aunt is also a like a unit test, like into testing. So like it's elaborate it? pardon. Yeah, Deepak. Can you repeat the question again? What you said right now? Yeah, actually, I actually in every challenge, I think not every, Yeah, but some challenges like F2F and some of challenges like yeah, yeah, I got a mention thing like unit testing, yeah. and in RDM previous RDM4 also Hmm. there is a written like Hmm. unit testing, but So I don't get that much clarity. yeah, so unit testing actually that's actually like a proper profession, if you ask me. Okay, but for top coders For it context, okay, actually your voice is breaking up, so I'll answer the question. Okay, whatever I understood, or you can just write it over here if you'd like to know anything. So yeah, so what you need to do is basically when you make a submission, if it requires unit testing, you just include at least some steps to verify that your code works. Okay, so what you do is that you run tests for all the capabilities that you've implemented. So for each like for example, if you have made an API, so for each API, I mean each endpoint, you create a automated testing for that. So what the reviewer would do is they would run that test like in an automated manner, and they would provide you points accordingly. And ओके या ओके सॉरी ओके तो दीपक मैं आपको बताता हूँ हिंदी में, ठीक है? क्या है कि देखिए क्या होता है ना कि जैसे यूनिट टेस्टिंग जो है एक्चुअली अपने आप में एक अलग ही प्रोफेशन है, ठीक है? यूनिट टेस्टिंग्स के लिए अलग अलग टीम होते हैं पूरे। जैसे आप विप्रो में जाओगे अगर, तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे टीम्स मिलेंगे, ठीक है? मतलब जिनका बस एक ही काम रहेगा कि यूनिट टेस्टिंग करना। लेकिन टॉप कोडर के कॉन्टेक्स्ट में मतलब उस लेवल का इन डेप्थ टेस्टिंग नहीं करना पड़ता है। लेकिन मतलब जो यूनिट टेस्टिंग है उसके लिए मतलब आपको बेसिकली जो जो कैपेबिलिटीज आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, आपको वो दिखाना होगा कि वो मतलब रन होता है, ठीक है? तो वो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट इम्प्लीमेंट करने होंगे। वो एग्जैक्टली कैसे होता है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जाइए इंटरनेट पे, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए कि जो भी है रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन यूनिट टेस्टिंग, तो आपको उसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स मिल जाएंगे कि कैसे होता होगा वो, ठीक है? मतलब वो बेसिकली वही है कि एक स्पेसिफिक स्किल है वो, मतलब वो ऐसे समझा पाना मुश्किल है। बस आप वही समझो कि एक हर एक यूनिट का टेस्ट करना होता है उसमें, मतलब जो जो यूनिट्स आपने इम्प्लीमेंट किया है। जैसे एक एपीआई होता है तो उसका एक एंड पॉइंट में कोई एक रिक्वेस्ट करना एक एक यूनिट होता है, तो उस टाइप से, या ठीक है? तो हाँ, एक्चुअली हाँ। अच्छा हाँ। अभी जैसे रीडमी फाइल्स में प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे हाउ हम्म, टू इम्प्लीमेंट इट हम्म। एंड हाउ इट वर्क्स लाइक दिस, वैसा क्या? नहीं, एक्चुअली उसका पूरा अलग ही होता है। मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो एक्चुअली अपने आप में ही वो एक अच्छा एरिया है। आप एक सिंपल काम कीजिए, जैसे आप लिखिए इंटरनेट पे या आप कहीं पे यूट्यूब में जाके सिंपल आप लिखिएगा ना यूनिट टेस्टिंग, जैसे पाइथन यूनिट टेस्टिंग, ठीक है? जावास्क्रिप्ट यूनिट टेस्टिंग, आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। मतलब वो एक्चुअली टॉप कोडर में जैसे रिक्वायर्ड होता है। जैसे ये देखिए ये एक्चुअली बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर डेवलपर को थोड़ा बहुत यूनिट टेस्टिंग लिखना आना चाहिए, ठीक है? तो वही है कि इसको आपको थोड़ा सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा उस एरिया में, उसका डिटेल्स आपको मिलेगा इंटरनेट पे। बस आप लेकिन सिंपल में आप यही समझिए कि ऑटोमेटिक मतलब बनाना पड़ता है स्क्रिप्ट, ताकि वो टेस्टिंग हो सके। उसके लिए बहुत सारे टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। एग्जैक्टली हाँ, मैं कंसिडर करूंगा। हाँ, एक्चुअली मुझे
समझ में नहीं आ रहे थे, और आरडीएम आने वाली है अभी हाँ मार्च शायद 7 को हाँ। आरडीएम है। तो मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि बिकॉज उसमें शायद जितने भी लैंग्वेज मेंशन किए जाते हैं उसमें से 2-3 लैंग्वेज तो आते हैं, तो मैं शायद उसके तरफ जा सकता हूँ। बट वो यूनिट टेस्टिंग करके कुछ लिखा था जो कि माइंड के ऊपर से जा रहा था कि ये क्या है, एक्चुअली मैंने आज तक करा नहीं, और बस इसीलिए ये क्वेश्चंस था माइंड में। तो मैं एक्चुअली सर्च करूंगा इसको और बिल्कुल। देखूंगा कि कैसे काम करता है और एक्चुअली होता क्या है। हाँ, क्योंकि मुझे भी याद है कि एक पॉइंट में मुझे भी याद नहीं था। ठीक है, तो मैंने क्या किया था कि यूट्यूब में मैंने सर्च किया था कि यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, तो बहुत अच्छा वीडियोस मेरे को मिल गया था बहुत सारा। ठीक है, उसको देख के डायरेक्टली मैंने वो जो टूल से डाउनलोड करके मैंने वो पूरा सॉफ्टवेयर लिख दिया था उसको देख करके। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको प्रोग्रामिंग आता है तो वो आराम से इंप्लीमेंट हो जाएगा, कोई बड़ा डील नहीं है। हाँ, आरडीएम से अगर पर्टिकुलर आरडीएम रिलेटेड आपको जानना है तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आज आप आइए उसमें पेना करने वाले हैं ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो आप उनके अच्छा। उनके में ज्वाइन कीजिए, उनके मीटअप में आज। ठीक है, लिंक मेरे पास तो है नहीं लेकिन वहां पर होगा अभी आपको। हाँ, मैंने पेना का करा हुआ है, हाँ, बट एक्चुअली मैं ज्वाइन नहीं कर पाता बिकॉज उनकी इंग्लिश ऐसी ज्यादातर तो मान जाती है। अच्छा। फिर से बोलिए, सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए क्या बोल रहे हैं। इंग्लिश। एक्चुअली उनकी इंग्लिश ऐसी है, हम्म। लाइक ज्यादातर टाइम तो माइंड के ऊपर से जाता है पेना का। वो अच्छा, समझ गया। हाँ, तो आप जेसी का समझ में तो आता है उनका। हाँ तो हाँ, थोड़ा है, होता ही है कि जैसे आप अगर अभी स्टार्ट मतलब वो बट मैं बाहर, फिर हाँ बाहर के लोग रहते हैं तो थोड़ा सा समझ में प्रॉब्लम होता है, वो समझ रहा हूँ मैं। देखिए, आप उनको एक रिक्वेस्ट कीजिएगा ना, हाँ, मतलब आप एसेंट का इशू है थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा वो रहते रहते आपका हो जाएगा, बात देखते रहेंगे ना आप सबको तो आपको हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे आपको एक और सजेशन दूंगा, आप जैसे साइड से आप एक और काम करिए कि जैसे आपका ऑलरेडी अच्छा ये है इंग्लिश। ठीक है, जैसे जितना भी आप मीटअप आप ज्वाइन करिए वो तो आप करते ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, और मतलब इस पे भी साथ में हम्म, काम करते रहिए, क्योंकि क्या है कि उसका मतलब जितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा इंग्लिश का उतना आपको फायदा होगा, आपको चैलेंज वगैरह समझने में वो सब में। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्चुअली टॉप कोडर पे। ऑलरेडी वैसे आपका काफी बढ़िया है इंग्लिश, उसके लिए बहुत ज़्यादा भी टेंशन मतलब आप दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक तो उनका मीटअप का बात है, तो आप एक काम कीजिएगा, जब आप ज्वाइन कीजिएगा ना तो आप वहाँ पे चैट में लिख दीजिएगा एकदम क्लियरली, मतलब कि एक रिक्वेस्ट करके कि रिक्वेस्टिंग यू टू मतलब एक्सप्लेन स्लोली बिकॉज आई हैव डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग योर, मतलब एक्सेंट या ऐसे करके पोलाइटली लिख देना, लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो धीरे धीरे बोलेंगे आपको, कोई भी एक्सेंट हो जैसे धीरे धीरे बोलेंगे तो समझ ही जाओगे ना फिर आप तो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, तो वही है। और एक्चुअली थैंक यू, आपने पिछले वीक बताया था हम्म। स्किल बिल्डर के बारे में पोस्ट करने के लिए वहाँ पे हाँ। स्लैक पे और डिस्कॉर्ड पे। हम्म। तो स्लैक पे डिस्कॉर्ड पे तो कोई नहीं मिला, बट हम्म। मैंने स्लैक पे वो जो स्किल बिल्डर मैनेजर है हम्म। उनका, तो उस पे बोला कि ये अच्छा चीज है कर, और मैं इसे फ्यूचर में ऐड करूंगा करके, क्रिएटिविटी 10 पॉइंट करके। अच्छा तो अच्छा, ये, चलिए बढ़िया हुआ तब तो। हाँ कौन है, कौन मैनेजर है, हाँ, नाम बताइए। उनका नाम मतलब नाम एग्जैक्टली मतलब एक, जस्ट फोट। सेकेंड, उस पे उनका हैंडल होगा, हम्म। बट हाँ, मैंने हैंडल एक्चुअली हैंडल। पोस्ट करा था उस पे, क्या बोलते हैं, देव जनरल पे। अच्छा, हैंडल है SYSTIC सिस्टिक, अच्छा सिस्टिक, हाँ STIC। सिस्टिक। इनका हाँ नाम तो नहीं था, हाँ हाँ सिस्टिक, हाँ। हाँ, तो हाँ, उनके सिस्टिक। उनके उस पे लेकर मैंने जो पायलट। हम्म। चलिए बढ़िया है, तब उनको अगर वो मैनेज कर रहे होंगे ये सब को, तब वो बाकी जितने भी को पायलट्स हैं उनको इन्फॉर्म कर देंगे उसके बारे में। ठीक है, और अगर आप देखिएगा कि कोई स्किल्ड बिल्डर में अगर ऐसा नहीं होता है ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप हम्म, सिस्टिक को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिएगा। ठीक है, कि देखिए यहाँ ऐसा स्किल बिल्डर हाँ, अभी नया आया हुआ है, डेफिनेटली। इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो मे बी इंटरनली फिर वो लोग मैनेज करेंगे कुछ। ठीक है ना। ओके, फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में जैसे और मीटअप्स, मीटअप मतलब ये स्किल बिल्डर्स अगर आते हैं तो आप उसमें नोटिस कीजिएगा कि उसमें है कि नहीं जो आप बोल रहे हैं, मतलब हाँ, डेफिनेटली। ठीक है। हाँ, डेफिनेटली मैं इस पर हम्म। हम्म। कंसिडर करूंगा उस टाइम में। हाँ, हम्म। फिलहाल तो सब कुछ अच्छा ही हाँ। जा रहा है। हम्म। अब मैं आगे का, अब स्किल बिल्डर से थोड़ा सा ऊपर उठने का टाइम है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आपको एक छोटा सा और टिप दूं मैं आपको स्टार्टिंग में हाँ, एक चीज कहिए ना। मैं सीखा था जो आपको बताता हूँ। देखिए,
जब आपको चैलेंज ज्वाइन कीजिए अगर जब भी, तो ना घर पे किसी को बताइए मत, ठीक है? हाँ नहीं बताता हूँ मैं। हाँ, किसी को घर पे मत बताइए। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि मतलब मैं स्टार्टिंग में 2-3 साल टॉप कोडर में जो मैंने मेरा बीता था, तो उसमें मैं सबसे मेन चीज यही नोटिस किया था ना कि अ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है एक्चुअली इमोशनल वाला प्रॉब्लम। जैसे अगर देखिए इसमें कैसा होता है कि अगर आप जीत गए तब तो पैसा बहुत बढ़िया आता है, ठीक है, मतलब कि लगेगा कि बस 3-4 दिन की मेहनत में इतना ज्यादा पैसा आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन जैसे नहीं जीतने से लगता है कि इतना मेहनत गया लेकिन उसका कुछ अमाउंट नहीं आया वापस, ठीक है। तो हाँ हाँ। हाँ, तो होता क्या है ना कि मतलब इमोशनल मैनेजमेंट इतना ज़्यादा जरूरी है कंपटीशन फॉर्मेट में। और एक्चुअली बहुत लोग इसको नहीं झेल पाते हैं, इसीलिए बहुत लोग कुछ दिन रह करके फिर जॉब वगैरह करने चले जाते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है ना, कि जो मतलब ये वाला पार्ट पे ध्यान नहीं देते। तो आप इसको अभी से ही मेकअप लेकर के चलिए कि वैसे आप ट्राई तो करेंगे सबको जीतने का, उसको तो बंद नहीं करना है, ऑफकोर्स नहीं बंद करना है, लेकिन बाई चांस अगर नहीं जीते फॉर एनी रीजन, ठीक है, कभी होगा आपके अपनी गलती से नहीं जीतिएगा, कभी हो सकता है कोई बढ़िया सबमिशन कर दे, कभी हो सकता है रिव्यू कोई खराब कर दे, कभी हो सकता है को पायलटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, जो भी कारण से हो, ठीक है, लेकिन लेके चलिए कि होता है ये चीज और होगा, जरूर होगा, ठीक है, कुछ भी हो जाए, मतलब क्योंकि हम लोग सबको मेहनत कर रहे हैं कि इसको ठीक किया जाए, रिव्यू को पायलटिंग एक्सेट्रा जितना भी हो सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है प्रॉब्लम हर तरह से, ठीक है। और कभी कभी तो सिंपली यही होता है हाँ कि एग्जैक्टली। हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इतना लोग सबमिट कर देते हैं कि जैसे आप याद कीजिए जो वर्ल्ड लेवल वाला जो कॉन्टेस्ट था, ठीक है, अब 19 लोग का कि ना 22 लोग का सबमिशन था उसमें, ठीक है, 22 लोग है तो उसमें तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि 3-4 लोग बहुत बढ़िया सबमिशन करेगा उसमें, उस टाइप का हो जाता है। तो मतलब ऐसा भी हो सकता एग्जैक्ट। था, हाँ ऐसा भी हो सकता था कि किसी और सबमिशन, किसी और कंपटीशन में अगर लो सबमिशन आता है ना, तो बहुत लोग आराम से जीत जाता उसमें, लेकिन उस टाइप का इंटेंस कंपटीशन हो जाने से जीतने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये सब चीज बस है ना, अपना मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। और उसके साथ साथ एक और टिप जो आपको मैंने दिया कि आप किसी को बताइए मत, जैसे आप सबमिट कीजिए किसी को मत बोलिए, अपने घर में भी बहन मम्मी पापा किसी को मत बोलिए, क्योंकि आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने नोटिस किया है कि जैसे अगर आप जैसे जीते नहीं तो उसको आप बर्दाश्त कर लीजिएगा, आपको खराब लगेगा, आप 10-15 मिनट आपको खराब लगेगा, आधा घंटा 1 घंटा खराब लगेगा, आप थोड़ा देर में हल्का फुल्का घूमिएगा फिरिएगा, आपका हेड मतलब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बता देंगे ना घर पे, और घर वाले मान लीजिए आप अगर पूछ रहे हैं आपसे, कह रहे हो उसका क्या हुआ, तुम किया था ना कुछ अभी सबमिट किए थे तुम, तो उसमें आपको फिर ना इतना अकाउंटेबिलिटी आ जाएगा ना कि फिर बताने में शर्म आएगा आपको, मतलब दिक्कत होने लग जाएगा कि अरे उसमें हार गए, तो समझाना पड़ेगा कि क्यों हारे, क्या क्यों नहीं हारे, ऐसे करके। तो सबसे आपको बेस्ट बता रहा हूँ, और घर पे भी सबको बोल दीजिए कि देखिए मेरे से बिना हाँ हाँ। मतलब का पूछिए मत, ठीक है। मैं क्योंकि मैंने ये चीज बोला था अपने घर पे, ठीक है, कि मैं अगर जीतूंगा तो आपको बताऊंगा, आप अलग से पूछिए मत मेरे से। तो उस टाइप का करके रखिए, फिर आराम से कीजिए एक बार तो ये जब आपका एक एक हो जाए ना, मतलब अपना खुद का एक जब डेवलप कर लेंगे आप, मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ठीक है, क्योंकि मतलब मैंने जो झेला है आपको मैं बता दे रहा हूँ अभी से। तो ये चीज मेरे को समझने में लग गया 1-1.5 साल, आपको 3 महीने में ही बता दे रहा हूँ चीज कि ये आप हाँ डेवलप कर लीजिए इसको अभी से, ठीक है। तो यही है। हाँ सच में ये। हाँ, हाँ। आप तो खुद देखते आप होंगे। मैरिड है अभी या सिंगल है? एक्चुअली मेरा पिछले मतलब इसी 2021 में हुआ है मैरिज। अच्छा। तो कंग्रेचुलेशन चलिए होगा। थैंक यू। हाँ। हाँ, एक्चुअली उसके बाद से तो ये नहीं वो, एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ उसके बाद से। उसके बाद से मतलब आपने जैसे बोला उसके बाद से कुछ। उसके बाद से एक्चुअली वही जैसे को पायलटिंग ये है, आपका कंपीट वगैरह करना जो होता था, तो उससे पहले और ज़्यादा कंपीट करता था। अभी क्या है कि थोड़ा मतलब बैलेंस करना पड़ता है, जैसे फैमिली हो जाने से थोड़ा होता है ना, बैलेंस करना पड़ता है टाइमिंग वगैरह। जैसे पहले होता था कि रात रात भर भी काम करता था, तो अब वैसा करना पॉसिबल नहीं है थोड़ा, तो वही है। क्या बोल रहे थे आप, बोलिए। नहीं एक्चुअली मैं भी पहले सुबह में 5 बजे। मैं भी सुबह में पहले 5 बजे सोता था, बट पैनिक एंजाइटी अटैक काफी टाइम तक, तो हाँ मैंने मतलब जल्दी सोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अब हाँ ये दिक्कत करने हाँ, वो लगता तो है है, प्रॉब्लम करता है वो सब, ऐसा। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो एक्चुअली यही चीज है कि अभी फैमिली, अभी तो मॉम डैड है तो ज्यादा हम्म दिक्कत था। एक दो हम्म चैलेंजेस के बारे में बता दिया था, तो उन्होंने पूछा था मेरे को एक्चुअली। हम्म, मैंने बोला कि रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया करके ऐसा। अच्छा। रिजल्ट पोस्टपोन्ड हो गया ऐसा। हम्म मैंने कुछ उसके बाद जो मैंने वर्ल्ड लेवल वाले में भी नहीं बताया, लाइटिंग जेएस हम्म वाले में भी नहीं बताया, और हम्म। अभी ये जो लिया है उसमें भी मैंने नहीं बताया, हाँ बिकॉज सच में
क्योंकि एक टाइम तक लगा था कि ये फर्क पड़ता है, उनका जो भी रिस्पॉन्स होता है ना उससे बहुत थोड़ा सा बहुत ज्यादा फर्क फर्क पड़ता है। पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ता है, बहुत ज्यादा, मतलब आप हाँ समझ नहीं सकते हैं। हाँ मतलब एग्जैक्ट। आप, जैसे आप देखिए, आप टॉप कोडर में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको पूरा डिटेल्स पता है, आपको पता है कि पूरा कंपटीशन है, हार जीत कैसे होता है, मतलब ऐसा मजाक नहीं है कि रखा हुआ कोई भी आके जीत के चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है ना, मतलब खास करके जो बड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन अब उनको उतना समझ समझ में नहीं आएगा एक बार में, उनको आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो और मतलब 99.9% जो आदमी को टेंशन होता है वो इसी को लेकर के होता है कि समझाऊंगा कैसे घर पे। सही तो सही बिल्कुल, बात है। हाँ बिल्कुल मत बताइए कभी भी, बस बोलिए कि हाँ चल रहा है कुछ कुछ मैं देखते रहता हूँ, इस टाइप का बोलिए कुछ भी। या बोल दीजिए कि कभी हाँ जीतूंगा तो आपको और बताऊंगा। हाँ हाँ हम्म, और अभी मैरिड नहीं हो तो अभी चाइल्ड का फोकस हर चीज लगभग जिसके बारे में भी थोड़ा सा जानता हूँ मैं हम्म, टैकल करने का कोशिश करता हूँ। हम्म, बिकॉज अभी एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नॉलेज ओरिएंटेड बनूं। अभी काफी ऐसी चीजें हैं क्योंकि मैं हम्म, प्रोफेशनल वर्क कभी नहीं किया हूँ। जो भी हम्म, जानता हूँ एक हम्म, बेसिक लेवल पे कह सकते हैं या कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल पे, बट हम्म, एज ए प्रोफेशनल लेवल पे नहीं जानता हूँ क्योंकि मैंने हम्म, ना किसी प्रोफेशनल टीम के साथ आज तक वर्क करा हम्म, है ना हम्म, कुछ भी। हम्म, तो मैं एक्चुअली टैकल करने से एक तो हेल्प मिल जाता है मेरे को कि हम्म, मैं देख पाता हूँ, मैं समझ हम्म, पाता हूँ कि हम्म, एक्चुअली मैं भले ना करूँ बट हम्म, 50% मेरा जब पास हो जाता है, मैं रिव्यू पास कर जाता हूँ, मैं हम्म, जब उनके सबमिशंस को देख पाता हूँ कि वो उन्होंने ऐसे करा करके, तो हम्म, एक दिमाग में जाता है कि वो ऐसे हम्म, हमें वर्क हम्म, करना है फ्यूचर में। हम्म, जैसे कि मैं डोकर के बारे में कभी जानता था, हाँ, बट एक टेस्ट पेमेंट करके आया था हम्म, चैलेंज, टीसीओ का इसका था, टॉप कोडर का हम्म, ही चैलेंज था वो, हम्म, पर्सनली उन्हीं का था। हम्म, तो उससे उसके बारे में मैं जाना, डॉकर हम्म, के बारे में जाना कि एक्चुअली डॉकर भी कोई चीज होता है करके, ठीक है। हम्म, तो हम्म, ऐसे ही रिलेटेड अभी आपने जो ये वर्ड लेवल चैलेंज आया था उसमें हम्म, मैंने जाना कि एक्चुअली हम्म, वर्ड वर्ड के साथ खेलते मतलब पाइथन से कोई भी प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। अभी हम्म, आपने दूसरा प्रोजेक्ट डाला तो उससे मैंने एपीआईज बनाना सीख लिया। मैं हम्म, अभी तक एपीआईज पे काम नहीं कर रहा था बट मैंने सीख लिया करके। हम्म, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से एक बिल्ड कर रही है, फ्यूचर के लिए मेरे को बिल्ड कर रही है। हम्म, तो मैं बस इसी पर्सपेक्टिव से मैं टैकल करता हूँ। और हम्म, हाँ मेरे लायक जैसे कि बिल्कुल, अभी स्किल बिल्डर हो जाते हैं हम्म, या छोटे मोटे कुछ F2F, हाँ तो हम्म, वो तो मैं मेरे को करना ही है और उसमें जीतना है एक्चुअली। बट हम्म, ये जो चैलेंजेस है ना उसको मैं जीतने के लिए नहीं, सही में बताऊं सीखने के लिए तो करते हैं। एकदम सीखने के लिए हाँ कि बिल्कुल। मैं, हाँ हम्म, और मैं उसमें, हाँ उसमें अगर मेरे को 30 मार्क्स भी आए हैं 40 हम्म, मार्क्स भी आए कोई दिक्कत हम्म, नहीं है। हम्म, एटलीस्ट मैं जाऊंगा अंदर में और सबमिशंस जो होंगे उनको हम्म, मैं डाउनलोड करके देख सकता हूँ कि उन्होंने वर्क कैसे करा है। हम्म, बस इसी के लिए मैं उसको उस प्रॉब्लम को टैकल करता हूँ। और कुछ हम्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं कह सकता बट हाँ कुछ अलग जो कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कोशिश करता हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या। और हाँ, डेफिनेटली अभी हम्म, मैं ऐसा किया हूँ, अभी आउट ऑफ द बॉक्स मैं किया है। मुझे लगता है कि हम्म, ऐसा हो सकता है मे भी किसी ने सोचा हो बट मेरे लिए ये चीज अच्छा था कि मैंने आउट ऑफ द बॉक्स करने का कोशिश किया है हम्म, वर्ल्ड लेवल के दूसरे चैलेंजेस में। हम्म, तो डेफिनेटली हाँ ऐसा। देखिए आपको और एक मतलब छोटा सा टिप देता हूँ, ठीक है, जैसे आप क्या कीजिए ना, जैसे जैसे आप अभी एपीआई के बारे में सीख रहे हैं, ठीक है, तो आप नेट पे सर्च कीजिए कि जैसे पाइथन एपीआई बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, पाइथन एपीआई डेवलपमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस करके। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ना कि ऐसा क्या चीज है जो जो बेस्ट लोग, बेस्ट जो टीम्स होते हैं वो लोग अपनाते हैं, ठीक है। तो उसका आपको बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा, आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो भी मिल जाएगा, आपको ऐसे आर्टिकल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे गूगल पे आप सर्च करोगे तो, ठीक है। तो उसको देख करके आप इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। देखो और आप लोग कैसे हो कि आप लोग अभी जैसे मतलब खुद से लर्न करने वाले आदमी लोग हो, ठीक है। तो इन लोग के साथ में क्या होता है ना कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो लोग और अच्छा सबमिशन कर देते हैं पुराने लोग से, ठीक है। जैसे मैं स्टार्टिंग में यही ट्राई करता था कि ऐसा सबमिशन करूँ ना जो पुराने डेवलपर लोग से भी बढ़िया सबमिशन कर दो कुछ। तो उसका एक ही तरीका है ना, हाँ, तो एग्जैक्टली। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे आपको बेस्ट प्रैक्टिस से सीखना पड़ेगा, मतलब आप उसका रिसर्च कीजिए कि क्या होता है, कैसे फाइल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फाइल का नेमिंग में कुछ किया जाता है क्या, फाइल का फोल्डर बनाने का स्ट्रक्चर में कुछ किया जाता है क्या, ये सब में भी पता कीजिए, हर चीज पे देखिए कि प्रोफेशनल क्वालिटी का फोल्डर कैसा बनता है। जैसे आप देखोगे कि जो जो फोल्डर भी बनता है ना, जो अच्छा क्वालिटी का फोल्डर होगा वो अलग होगा, ठीक है, वो लोग अलग से बनाएंगे, एसआरसी करके फोल्डर बनाएंगे, डॉक्स करके कुछ बनाएंगे। तो उसको भी समझने का ट्राई कीजिए, और ये सब सब सोर्स आराम से अवेलेबल है इंटरनेट पे, ठीक है। तो इन सब पे भी, एग्जैक्टली। हाँ, तो यही है कि इसको मतलब हर चीज में इसमें कीजिए। हाँ, अब बताता हूँ आपको, जैसे डेटा साइंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह में एक थोड़ा सा ट्रिक क्या हो जाता है ना कि मतलब ये कोडिंग के साथ साथ टेक्निकल एरिया भी है,
ठीक है। जैसे टेक्निकल एरिया बोला जाए तो जैसे अब मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि साइंटिफिक सिमुलेशन प्रोग्रामिंग करना है, साइंटिफिक सिमुलेशन, ठीक है ना। तो इसमें कोडिंग पार्ट तो है ही, कोडिंग पार्ट, लेकिन जो साइंटिफिक सिमुलेशन है इसके लिए आपको जो साइंस पार्ट है वो भी आना चाहिए ना। तो एक तरह से एनएलपी और मशीन लर्निंग एक तरह से उसी टाइप का चीज़ है। तो इसमें है कि पाइथन प्रोग्रामिंग अपना एक साइड का चीज़ हो गया, लेकिन जो उसका कॉन्सेप्ट है वो उस सब्जेक्ट एरिया का है। जैसे होता है ना कि कॉर्पस में वर्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टीएफ-आईडीएफ क्या होता है, ये सब हो सकता है कि आप एक दिन पढ़े, किस्मत अच्छा हो, कहीं अच्छा अगर वीडियो मिल जाए तो आपको पता चल जाए सब कुछ एक दिन में, या हो सकता है कि आपको कोई अच्छा आर्टिकल मिल जाए तो उससे आपको पता चल जाए। लेकिन जनरली क्या है, ये सबको थोड़ा सा मतलब आपको अलग से भी हल्का सा उसको पढ़ते रहना होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब ऐसा एरिया है ना कि आदमी अपना पूरा करियर बिता देता है इस एरिया में, फिर भी उसको सब चीज़ का आइडिया नहीं होता है। तो अब जैसे इस केस में फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है एज अ को पायलट थोड़ा, कि जैसे अगर कोई वो नहीं समझ रहा है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हैं, आप जैसे मान लीजिए कॉर्पस का मतलब नहीं समझ रहे हैं या वर्ड फ्रीक्वेंसी नहीं समझ रहे हैं, तो मेरे को एक्चुअली आपको ट्यूटोरियल देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, कि जैसे आपको कोर्स थोड़ा सा देना पड़ जाएगा मेरे को, आधा घंटा का या 1 घंटा 1.5 घंटा का। तो वो एक्चुअली कर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब एज अ को पायलट। तो वही थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अदरवाइज जो, अगर आपको बैकग्राउंड थोड़ा है, उसके बाद आपको स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन चाहिए तो हम लोग तो बैठे ही है, मतलब को पायलट का काम ही यही है कि आपको आंसर करें फोरम पे। तो आराम से पूछिए आप जो भी क्वेश्चन हो आपका। एग्जैक्टली, और इससे भी हो जाएगा कि, आपका आवाज बहुत कट रहा है अभी। कुछ है उस एंड तक ना कुछ तो पोस्ट कर। हाँ हेलो, अब आ रही क्या? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा कट कट के आ रहा है, मतलब बहुत धीरे धीरे कट कट के आ रहा है आवाज। आज में भी इंटरनेट हाँ, का इंटरनेट का कोई इशू इशू हो है। गया हाँ, है। कुछ प्रॉब्लम है आज इंटरनेट का, लगता है आपका। हाँ, गांव में एक्चुअली यही बता रहा था। हाँ, वो तो है ही। तो प्रॉब्लम है ही सब। हाँ तो एक्चुअली वो चैलेंज के बाद ना मैं समझने का कोशिश करूंगा, और हम्म। अगर कुछ डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली मंडे मीटअप में आके आस्क हम्म। करूंगा जरूर, ठीक है। ठीक है। हाँ। ऐसा मतलब कुछ भी, बस थोड़ा सा हिंट। और हम्म। हाँ, एक मेरे को पूछना था, आपने हम्म। बताया कि जैसे में और एमएल में कि ये कोड आज भी जैसे साइंस का कोड है, तो एग्जैक्टली मेरे को ना अपने काफी पहले छोड़ दी थी, बट हाँ उस टाइम थोड़ा फिजिक्स मेरा अच्छा था करके, ठीक है। हम्म। हम्म। बट अगर आप इस तरीके कह सकते हैं कि अगर एमएल में और में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का भी अच्छा रोल है, तो डेफिनेटली मैं मिक्स भी स्टार्ट करूंगा अगर नहीं नहीं, ऐसा है तो, फिजिक्स का रोल बिकॉज नहीं है वो, मुझे मैं अभी आपको तक एग्जांपल दे रहा था। कोई गाइडेंस। नहीं, मशीन लर्निंग में फिजिक्स का रोल तो कुछ अच्छा नहीं है। अच्छा, ऐसा। हाँ, वो आपको एग्जांपल दे रहा था अच्छा। कि जैसे जैसे पाइथन प्रोग्रामर बहुत लोग का जॉब लगता है। जैसे जैसे देखिए, अगर मेरे पास जैसे मान मान लीजिए मेरे को साइंस अच्छा से अगर आता है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास हम्म, प्रूवन स्किल्स है साइंस का, हम्म, और मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग भी आता है, तो एक्चुअली बहुत हम्म, सारा ऐसा रोल रहता है ना जिसमें हम्म, साइंटिफिक सिमुलेशन करना पड़ता है। ये सब जैसे बड़ा बड़ा रिसर्च सेंटर वगैरह में होता है, ठीक है। तो मैं उसका एग्जांपल दे या रहा था कि अगर, तो उसमें आपका सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग एनफ नहीं रहेगा, ठीक है, आपको आपको फिर वो साइंस भी आना पड़ेगा। वो मैं एग्जांपल दे रहा था एक्चुअली। तो एग्जैक्टली, हाँ, तो उसी टाइप सही का है ये। बात। हाँ, तो उसी टाइप का है ये, लेकिन इसमें साइंस का जरूरत नहीं है, इसमें बस ये मैथ्स का थोड़ा बहुत जरूरत रहता है। और एनएलपी में बहुत ज्यादा मैथ्स का जरूरत नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट उसका कुछ कॉन्सेप्ट बहुत सारा रहता है। जैसे कॉर्पस हो गया, उसके अंदर में बहुत सारा चीज होता है। कॉर्पस होता है बेसिकली एक स्टैंडर्ड सब आपका टेक्स्ट का पार्ट वगैरह होता है। तो ये सब देखिए, मतलब ये तो एक्चुअली बेसिक्स है। तो ये सब है, जैसे आप उसको पढ़ लीजिए, कहीं से भी अवेलेबल है बहुत सारा रिसोर्स, आप नेट पे आके कहीं भी सर्च करोगे कि एनएलपी का बेसिक्स क्या होता है, ठीक है। अब उसको देख लो 1-2 घंटा 3 घंटा जितना भी आपके पास टाइम है, बैठ के आराम से देखो उसमें। तो उसको अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो आप थोड़ा बेटर कंपीट कर पाओगे। हाँ, बस वही है कि जैसे मान लीजिए आप आके मुझसे अगर पूछेंगे ना कि अच्छा जैसे बताइए कि ये वर्ड वर्ड फ्रीक्वेंसी है तो क्या होता है, तो मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा कॉर्पस का मतलब क्या होता है। तो उतना कर पाना बहुत मुश्किल है ना असल में, तो मतलब एक्चुअली मेरे को आपको ट्यूशन देना पड़ेगा, तो वो तो कर पाना हाँ, बहुत, कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वही है। आप बस गाइड कर दो, बस हाँ, छोटा छोटा हिंट, बस टाइम टाइम पे छोटा छोटा हिंट चाहिए, तो मैं कर लूंगा, देखिए बेशक हिंट, कर देखिए लूंगा। हिंट जो दूंगा मैं आपको फोरम पे ही दे पाऊंगा ना, क्योंकि अलग से करना तो अनफेयर रहेगा, जैसे अलग से आपको अगर नहीं, कुछ में हिंट। एक्चुअली एक्चुअली मंडे मीटअप में जब आते हैं ना, तो अब एक्चुअली मैं ना, एक्चुअली जो भी मुझे प्रॉब्लम होगा
क्योंकि मैं इस रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ फ्यूचर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में और फ्यूचर रिलेटेड एमएल एंड एआई में, ठीक है। और आप डेटा साइंटिस्ट है, मतलब आपने मशीन लर्निंग वगैरह अच्छे से करा हुआ है, तो बस मेरे को छोटा छोटा हिंट चाहिए होगा, जैसे मैं नेक्स्ट 1 मिनट में कुछ पूछूं, कुछ पढ़ूं अभी वीक में, और NumPy हो गया, PyTorch हो गया, ये सब कंप्लीट करना है। उसी वैसे ही जैसे अभी आपने बताया कि एपीआई के बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ना, तो ये सब चीजें ना मेरे लिए फिलहाल नया है, बट अब मेरे को समझ में आ रहा है एक्चुअली करना है क्या मेरे को। तो इस छोटी छोटी हिंट्स बस मेरे को चाहिए इन द फ्यूचर, मैं पूछूंगा। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप ऐसे ही पूछ रहे हो ना, जैसे कि मान लीजिए कोई चैलेंज मैं होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं कोई चैलेंज होस्ट कर रहा हूँ और उस समय वो चैलेंज लाइव अगर है, ठीक है ना, लाइव अगर वो चैलेंज है, तो मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, उस समय। लेकिन अगर आप जनरल पूछोगे ना, जैसे हाँ, अगर आप जनरल पूछोगे तब तो मैं कुछ भी आपको मतलब बता सकता हूँ, मतलब जो लिमिटेड टाइम में किया जा सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि अब मैं पूरा आपको कोर्स करा दूं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता ही दूंगा, मतलब हल्का फुल्का। हाँ एग्जैक्टली। और एक और चीज कितन भैया, एक्चुअली मीटअप्स में ज्यादा लोग आते नहीं हैं, जबकि मैंने देखा है चैलेंजेस में, जैसे पीजे मैथमेटिशियन है। हाँ, तो एक्चुअली ये बोल रहा था कि जनरली ये मीटअप हाफ आवर का होता है, बट ये एक्सटेंड हो जाता है कभी कभी 1-1 घंटा, जैसे कभी एक्सटेंड हो गया 1-1 आवर तक, ठीक है। हम हर मंडे को, हेलो बोलिए, हाँ, हर मंडे को हम लोग ना एक स्पेसिफिक टॉपिक रखते हैं, ठीक है, जिसके बारे में पीपल्स सच में जानना चाहे। स्पेसिफिक टॉपिक्स आप कर सकती है, या सच में कुछ भी। टॉप कोडर एक ऐसा चीज है जिसके बारे में होता है कि बहुत सारा चीज अभी जानना है सबको, बहुत सारा चीज है। तो स्पेसिफिक टॉपिक रखते हैं हर वीक में एक, और वो हम पोस्ट करते हैं अपने डिस्कॉर्ड पे या सेलेक्ट पे कि इस टॉपिक के बारे में अगर जानना है मोर डिटेलली तो आप प्लीज ज्वाइन करो। हाँ, और उस पर बात करते हैं, तो पीपल्स आएंगे, मेरे को लगता है। आप एक काम करो, मैं आपको सबसे बेस्ट बताता हूँ। आप ना जैसे आप अलार्म लगा लो अपना, मतलब रिमाइंडर डालो मोबाइल में, ठीक है, कि आप मतलब थर्सडे तक आप मतलब स्लैक नहीं, वहां पे डिस्कॉर्ड में आप ऐसे करके आप डालो ना कि टॉपिक रिक्वेस्ट, ठीक है ना, टॉपिक रिक्वेस्ट फॉर मंडे मीटअप, ठीक है, मंडे मीटअप साउथ एशिया। अगर मेरे को करना है तो आप मेरा साउथ एशिया लिख दीजिएगा, ठीक है, या मेरे को टैग कर दीजिएगा। और या अगर आपको जैसी वाले में कुछ अगर रिक्वेस्ट करना है तो आप उसमें उनको टैग कर दीजिएगा, या अगर आपको पेना को से कुछ अगर स्पेसिफिक जानना है तो आप उसको टैग कर दीजिएगा, ठीक है। और आप वहां पे डालिएगा, तो वहां पे होगा ना, तो फिर वहां पे और सही लगेगा कि वहीं पे मैं आपको बोल दूंगा अच्छा ठीक है चलिए इसी पे करते हैं, और मैं उसी का अकॉर्डिंगली फिर प्रिपेयर भी करूंगा थोड़ा, ठीक है। और आप डीएम मत कीजिएगा, जैसे डीएम आप मुझे करेंगे तब उसमें फायदा नहीं है, उससे बेटर है कि वहीं पे आप कीजिएगा, ठीक है, ताकि सबको देखें उसको, ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, जैसे आज मैं एक्चुअली आपका मैसेज आज सुबह देख रहा था, जो आपने लिस्ट भेजा था ना, वो मैं सुबह उठा था, थोड़ा लेट से कल सोया था, तो आज लेट उठा तो देखा क्या मैसेज आया आपका। तो मेरे को लगा यही चीज़ अगर थर्सडे या फ्राइडे को कर दिए होते तो सबको मैं बोल भी देता कि इस पे बारे में बात करने वाले हैं, और उस पर रिसर्च करके आता बढ़िया से, और पूछ भी लेता जैसी से, अगर मेरे को खुद को कुछ क्वेश्चन होता तो आप वही कीजिएगा, आपसे थर्सडे को आप कीजिएगा, ताकि फ्राइडे को जैसी अवेलेबल रहेंगी तो उनसे मैं बात भी कर लूंगा कुछ, ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ, बस आप वही कीजिएगा। हाँ, तो अब तो 1 आवर, मोर देन 1 आवर हो गया। हाँ, हम लोग का लंबा ही चलता है, हम लोग का मीटअप काफी। अगले वीक में मेरे को पता है अभी लोग आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करेंगे ना, पीपल्स पक्का कनेक्ट होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। और एक और चीज होने वाला है अभी शायद, कि जैसे अब डिस्कॉर्ड के अंदर से भी मीटअप होने का शायद पॉसिबिलिटी है। डिस्कॉर्ड के अंदर भी जैसे ये वीडियो कॉल प्रेजेंटेशन वगैरह का शायद है टूल्स अवेलेबल, तो उसके अंदर से भी शायद अभी कुछ प्लान हो रहा है कि शायद उसके अंदर भी मीटअप हो सकता है। वो होगा तो और अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग अवेलेबल होंगे सीधा ज्वाइन कर लेंगे वो लोग, अलग से जूम इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, वो सब है, तो यही है। हाँ। तो चलिए ठीक ही है, उसका जो अनाउंसमेंट होगा तो बताएंगी जैसी, ठीक है। ओके 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 चलिए okay then for this week it was nice talking to everybody, so see you next week.